बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोगों के इंग्लिश के नोट्स हैं फर्स्ट ईयर के, मेरे पास अवेलेबल हैं। जो नहीं परचेज़ 100 रुपीज़ इसकी चार्जेज़ हैं। जो परचेज़ नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो से आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, ये मैं एक्सरसाइजेज़ 1 2 3 4 5 6 इनकी एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन एक्सरसाइजेज आंसर वाली एक्सरसाइज जो ये वाली ब्लैक ह्यूमर और आई की क्वेश्चन नंबर 424 सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपलोड किए हैं। आज मैं आप लोगों को 7 8 9 10 एंड 11 एक्सरसाइज की दिखाऊंगा। प्ले सेक्शन जो है फर्स्ट ईयर क्लास की बुक का, जो फर्स्ट ईयर क्लास है, जो न्यू बुक आई है इंग्लिश की, सेक्शन सी प्ले, उनके नोट्स हैं। एक्सरसाइज नंबर 7। अच्छा, ये सब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बस इसका मतलब ये है एलिन आपके पास आता है तो आप उनसे कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। इफ़ एन एलिन विजिट्स द अर्थ आई विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम हिम और हर। हु आर यू, आप कौन हैं। आई एम एन एलिन, मैं एक एलियन हूँ। अच्छा, व्हाट डू यू पीपल कॉल यू। पीपल कॉल मी क्रेटोन। ये मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, आप अपने बना सकते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम। आई एम फ्रॉम एन अदर प्लैनेट्स। What is the life on your planet? It is very simple life on our planet. People live cooperatively and never to harm any other. Why do you look like a joker? आप जोकर की तरह क्यों दिख रहे हैं? It is because of my costumes. We wear such type of costumes different from yours, so that I seems to be to you a joker. Are all others on your planet wear such type of odd dresses? Yes, we all wear this type of dress. This is our traditional dress. Why have you come here on our planet? I like the greenery of your planet. I love it, so that I visited to your planet. Or not you an spy? No, on our planet, people never think or plan to harm others, so that I am not an spy. I just came here for enjoying the beauty of the planet. Question number 8. Which thing do you like more on our earth? Your hospitality. I like the way you speak, behave and serve. It is really amazing. What is famous on our planet? Lambha dancing is famous on our planet. It is a type of dancing we used to do collectively on the beat of saucers. Do you usually visit to our planet? No, I was interested, but this is my first time to visit our planet, your planet. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स थे। अब आप लोगों को मैं आंसर एक्सरसाइज नंबर 8 दिखा रहा हूँ। ये अच्छा, ये कैरेक्टर्स हैं, इनको कैरेक्टर्स को मतलब कुछ बताया भी गए हैं कि कैरेक्टर्स की ये पॉइंट्स आप लोगों ने बतानी है, तो मैंने एक्सप्लेन की है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मिसेस स्पेल्डिंग, ये मिसेस स्पेल्डिंग इज़ अ मेजर कैरेक्टर इन द प्ले। मिस्टर स्पेल्डिंग सॉरी, ही हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज़, मेजर कैरेक्टर है, ठीक है, और ये फॉलोइंग क्वालिटीज़ हैं। पर्सनालिटी टेस्ट कौन सी है इसकी? ही इज़ ए मिडिल एजड, अनक्यूटस एंड रेजोनेंट। रोल इसका क्या है? He plays a role of TV broadcaster in the play. He is a major character in the plays. He plays a vital role in the developing of a story. ठीक है, एक्शंस इनके कौन है? His broadcasting about the spaceship. He denies the new technology. His protest against the marriage relationship of his daughter Ellen and John. His protest against the martial law at his house. Others opinions, दूसरों के बारे में opinions जो है। Professionally he is a sincere and honest. He cares, मतलब दूसरे opinion कोई भी। He cares for his family a lot. He is an adventurous and ambitious. He is proud of American. He is an American in nature. Overall, he is a sincere person. Mrs. Spalding, personality traits इनकी क्या है Mrs. Spalding की? She is bored and vague. She knits passively while his husband talks at his desk. Role, she plays the role of wife of a TV broadcaster and the owner of the Rose Garden where Croton is landed with his spaceship. Actions, she interrupts and favors her daughter against her husband. She also favors John while her husband is talking about him. She protests against the Croton who spoils her rose garden. Others opinions, और कौन से opinions हैं ये देख ले। She is a fashionable lady. She cares for her fashion a lot. When she sees Croton, she likes his whiskers a lot. Whiskers बड़े बालों को कहते हैं। For that he goes to her makeup room and use it to beautify herself. She has no sacrificial sense. Sacrificial sense नहीं है इसमें तथा she always worries about her rose garden except she has an sympathetic nature. She sympathizes with John and her daughter.
एलन एक और करेक्टर जो होता है, एलन जो उसकी बीवी मंगेतर होती है जॉन की, उनकी बेटी होती है मिसेस एंड मिस्टर स्पेल्डिंग की. शी इज़ अ लिवली एनर्जेटिक एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 20. शी विट गेट्स as she listens. Role she plays is a role of daughter of the TV broadcaster whose house is used for the setting of the play. Actions: she goes against her father in the matter of her marriage with John. She favors John and his work. She interferes and requests Croton to read her and John's minds. Other opinions: she is a lover and always favors John, his fiance. She is caring because she cares John a lot while he goes near to Keraton and his spaceship. She is sensitive and fanciful too. Overall, she is a nice of nature. Personality trait: John Gay, young and energetic boy. Role: he plays the role of fiancé and the first person who notifies the appearance of Keraton and his spaceship. Actions: comes and witnesses first the appearance of Keraton and his spaceship. First person goes very close to the alien. Worries about the family who don't know where he is. Others' opinion: he is a hard worker but not ambitious. He has his own farmhouse. He sits and works there but never tries to do an adventurous work. He has a purple thoughts about Helen. जनरल पावर एक और कैरेक्टर है जिसको आप एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, विलेन भी कह सकते हैं. पर्सनालिटी ट्रेट्स: मिडिल एज्ड जनरल, ग्रीडी ऑफ प्रमोशन एंड प्राउड ऑफ America. He is disciplined and a sober person. He plays a major role. In some sense, he can be said a villain of the play. He plays an antagonist role against Keraton. ठीक है. Actions: he comes with his equipped army to arrest the Keraton. He imposes martial law in the house of the Spalding. He wants Keraton to surrender. He also talks to the President of the United States. Others' opinion: is an honest army officer. He works first for his country, then for his promotion. He is a boast of America. He represents a true American. Overall, he is a disciplined and sober officer. Keraton जो हीरो इसका कहलाता है वो देख लें. Personality traits: he is a 40 years old. He is a mild, pleasant looking man with side whiskers and dressed in the fashion of 1860. Role: he plays major role in the play. He is the hero of the play. He plays surrounds his role. अच्छा. Actions: he reads the minds of the earthen people. He encounters with general powers. He stuns the army of the general powers. Others' opinions: he is a kind and soft nature. He speaks kindly to everyone. He has a full control over his mind and emotions. He never hurries to do things. He does the things on the extreme time. एक्सरसाइज नंबर 9 जो है ये देख लें कि भाई अर्थ की, एक्सरसाइज नंबर 8 क्लियर, अर्थ की लाइफ जो अर्थ की ज़िंदगी है और केरोटोन की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है. ठीक है. ये एक्सरसाइज देख लें. The people of the two planets have no comparison as the people belonging to Keratons are much more advanced than those of Earth. Compare and contrast. Comparison तो कोई नहीं है, वो more advanced है Keraton के. अच्छा. They can cooperate cars without any instruments. They can travel huge distances in a day and can speak all languages. वो सब languages जानते हैं, कार को इंजन के अलावा चलाना जानते हैं. The people of the earth cannot compete with them as they are far more learned and have progressed a lot. ठीक है. जो cannot compete with them, उसके साथ जो अर्थ के लोग हैं compete नहीं कर सकते हैं, वो more developed हैं. They are free from hatred and are not in favor of violence. We can determine from the character of Keraton that they feel pride in the service of mankind and are highly sophisticated people. Furthermore, they possess extraordinary powers which are complete myths for humans. They can listen to the minds of other people, and we see in the play that Keraton creates an invisible wall around the spaceship. He proclaims that the human civilization is just beginning and upholds the primitive traits. The statement is quite appropriate as we are far backward in comparison to the people of the planet. एक्सरसाइज नंबर 10 जो है समरी इसकी लिखनी है, समराइज करना है. ठीक है. मैं पढ़ देता हूँ समरी को. ठीक है. अच्छा. एक्सरसाइज नंबर 10. A play visit to a small written by Gore Vidal, an American playwright. It is a reflective comedy. ये कॉमेडी है. It contains the elements of adventure, suspense and comments about the modern civilization. Keraton, a mystery character from
other planet is the central character. The play starts with the broadcasting of Spalding in his own home in Silver Glen, Maryland, America. Roger Spalding with his wife and a daughter and two technicians denies the presence of a spaceship. After broadcasting, they start to discuss the household problems. As Ellen, his daughter, ironically praises the broadcast of his father, he criticizes John, with whom Ellen is going to be married. Suddenly, the characters face conflicts while they see an strange creature landing on the rose garden of their house. John points out the spaceship first. They have different ideas about it. Some call it a meteor, while others deny it. The story goes towards the climax when Creton and Aline comes out from the spaceship. Spalding calls out General Powers, an army man who confirms to come soon. After a short discussion with Creton, they notice the arrival of General Powers with his troops. From here, the climax of the story starts. General Powers imposes martial law in the house of Spalding. No one is allowed to move from the house. The General wants Creton to surrender, otherwise he will be destroyed. From here, the events leads to the ending of the story. Creton tells kindly the reason of his coming to the earth. He confirms that he is neither an spy nor an observer. At last, when General Powers orders Ed to grab him, he shows his superpowers. He makes an invisible wall around the spaceship. After it, no one can touch it. He also stuns General Powers, Ed, and all other soldiers. At last, he goes to sleep. The play ends there. curtain. ठीक है. अच्छा उसके बाद है लास्ट एक्सरसाइज है कुछ मतलब इनके प्लॉट के बारे में लिखना है, कैरेक्टर कौन सा है इसमें, डायलॉग कौन से यूज़ हुए हैं, सेटिंग कौन सी यूज़ हुई है, देख लें मैंने आसान तरीक़ों से लिखा है. द स्टोरी ऑफ प्ले स्टार्स विद स्पेल्डिंग ब्रॉडकास्टिंग. ओवरऑल प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द क्रेटोन्स विजिट टू अर्थ. पूरा प्लॉट जो है इस पर रिवॉल्व करता है, क्रेटोन का विजिट जो है. Creton and Aline visits here to observe and enjoy this planet. General Powers represent this planet, encounters the alien. The people of this planet try to resist the alien but fail due to the lack of technological advancement. The play ends with a funny scene of stunning the earthly characters of by Creton. उसके बाद कैरेक्टर्स कौन से हैं? रोड स्पेल्डिंग टीवी ब्रॉडकास्टर है, मिसिज स्पेल्डिंग वाइफ ऑफ रोगर स्पेल्डिंग, हेलेन डॉटर ऑफ रोगर स्पेल्डिंग, जॉन एलेन्स फियांसे, General Powers army man, Ed captain and work under General Powers. Creton मेजर कैरेक्टर. डायलॉग जो है इसके सैटरिकल हैं, आयरनिकल हैं, सीरियस हैं और सम कॉमिक डायलॉग्स आर यूज्ड इन द प्ले. सेटिंग जो है द सेटिंग ऑफ प्ले इज प्योर अमेरिकन. द टाइम मेंशनड इन 19th and 20th century. द प्ले स्टार्ट्स एंड एंड्स इन मेरीलैंड. तो अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आपके नोट्स की सूरत में PDF में, तो आप इस पे नंबर पे रब्ता करें. 100 रुपीज़ इस सेक्शन की चार्जेस हैं. हमारे पास 4 सेक्शन के नोट्स हैं. ग्रामर सेक्शन जो पूरी ग्रामर की जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व है बुक की, और उसके अलावा पोइट्री सेक्शन के पूरे 7 पोएम्स और एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री की एक्सरसाइज सॉल्व हैं. 10 चैप्टर्स भी हमारे पास है और प्ले के भी. ठीक है, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके मुझसे नोट्स परचेज कर सकते हैं. 100 रुपीज़ पर सेक्शन की है. टाइमली आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे. अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक.